So now in the CST studio, when we go about, if you look at, this is not a only. I hope you all must be knowing the MATLAB. MATLAB तो पढ़े हैं. So when we say MATLAB is a complete package. सब कुछ बहुत काम कर सकते हैं और MATLAB में इतने काम कर सकते हैं जितना कि मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना कोई एक्सपर्ट जानता है. यदि आप इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेट अस से दैट इलेक्ट्रॉनिक्स experts, they will say that, well, I know the algorithm, I know the programming, I know how to do the simulation and all, isn't? We can write the codes and all. Algorithm we can develop. If you go to the bio department, they will say that I can use the different types of optimization technique in this. If you ask the physics people, they will have their own. Even the business people, for them also they have a number of statistical tools in the your MATLAB. So the MATLAB is a complete package. Similar to that, CST Studio, when the term studio comes, it is a complete package. One of that out of that package, one element or one component is Microwave Studio. CST Microwave Studio. Earlier, only the Microwave Studio used to be there, but since there is a competition always, so every company used to enlarge the facility or enhance the facility. So they have added on the different modules. So here the modules which you can use all are mostly related to electromagnetics. जैसे कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर आप पढ़ सकते हैं, आप नॉन लीनियर डिवाइसेस भी बना सकते हैं, एम्पलीफायर वगैरह. ओके, then you can, that is the active elements. They have given the similar to your multisim, they have also added the library for the different semiconductor devices. Although they are limited, then it comes the analysis of the charge particles. So there are plenty of things which we can do. So out of that plenty of the things, only we are going to focus on CST Studio. So when it comes the Microwave Studio, again the Microwave Studio can be used for the multiple purposes. One purpose may be the electromagnetic. If you want to do the analysis of the electromagnetic interference at the high frequency, that you can. If you want to use the CST in the medical application, like if tumor detection, that can also be detected or it can be done. You can do the simulation. If you want to study the effect of the MRI, that is also possible. Is it? One part. Another part is your different electromagnetic stealth technology, you can say, or the devices which are normally used in the electronics warfare, that is called the frequency selective surveillance or similar devices you can design. Then one component of that is the antenna design. Antenna design is only one component of that entire. You can say that if you look at in the broad sense, you will find that antenna design in the CST is only one component. Apart from this, it has plenty of applications. It's not that only the software is dedicated to a particular application, but multiple. So today we will be looking at that. So as to start that one, normally for the layman, once you are expertise in that, obviously you will have your own views. So we can start from here, that is called a template. Now look at, in this CST, to create the project, you have different again the components. One is the microwave, RF microwaves and RF public opticals. So if you want to do the simulation or the analysis in the RF domain or high frequency domain or the opticals domain, you can choose this template. This here, the template from this group. Then if you want to electronics analysis or circuit board analysis, which normally you have used in the express PCB design and all, here also this facility is there that if you want to use that. But we are normally not using because that's not related to where it requires the EDA or you can say electronics. Suppose that I want to check the signal integrity. Have you heard the name of the signal integrity? Signal integrity means what? That on the PCB, if you have the two wires, normally even though at the low frequency also, even though normally we used to connect the two adders, two digital devices, is it? Suppose that you are designing one ADC, analog to digital converter, it will have some frequency clockings, isn't? So if number of wires are there, and if whether there will be any interaction
among wires or the among connectors, क्योंकि एडीसी में हम मल्टीपल इनपुट दे रहे हैं, राइट? तभी होगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। आपको मल्टीपल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सप्लाई देना होगा। क्या उस सप्लाई में क्या एक सप्लाई दूसरे से आइसोलेटेड है? सपोज दैट मैं बाइनरी बिट 2 के लिए, वेटेज के लिए 2 के लिए इनपुट दे रहा हूँ, 4 के लिए दे रहा हूँ, 8 के लिए दे रहा हूँ, सो ऑन। सो क्या ये जो 4, 2 ये सब एडजेसेंट है, क्या वो आइसोलेटेड है? यदि आइसोलेटेड है तो अच्छी बात है। यदि नहीं आइसोलेटेड है, then obviously the signal is going to have some leakage or mutual coupling. Then there may be the change in your magnitude also. So that ultimately may result in the error whether you are using in the digital form or in the analog form. So if you want to, that you can do the analysis using the signal integrity. कि हम सिग्नल की इंटीग्रिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचिए कि 2 डिवाइस हमने कनेक्ट कर दिया है। नॉर्मली उसको हम प्रीफर करते हैं एक सिंगल ग्राउंड प्लेन देने के लिए। यदि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके पीसीबी डिजाइन में, आपने देखे होंगे कि मोस्टली वी यूज टू गिव द सेम ग्राउंड प्लेन टू एवरीवन। Am I right? Why it is? यदि हम सबको अलग अलग ग्राउंड प्लेन दें तो क्या डिफिकल्टी होगी? What the problem we are going to have? The ground plane, ideally speaking, when we have the ground plane, they should be at the zero potential. Number 1, I assume that one of the design is correct, which is at the ground is at the zero potential. The remaining may have or may not have. If they have the same ground plane, then everywhere you will find that it is having the zero potential. But if you have given the isolated or independent ground plane to each of the device or each of the component on the board, then what will happen? There may be the voltage difference. Voltage difference हो सकता है, एक ग्राउंड प्लेन और दूसरे ग्राउंड प्लेन के बीच में आप चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा और एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। There may be the difference of only 0.1 or 0.01 or 0.02 volt, but that will impact the performance because you are unable to maintain the signal integrity. सिग्नल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? हम ग्राउंड प्लेन यूज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड हम क्यों यूज करते हैं? कि हर कंपोनेंट को सेम ग्राउंड मिले, हर कंपोनेंट को हमें सेम ग्राउंड मिले। क्योंकि आप लोग ग्राउंड यूज करते हो नहीं, यदि अलग अलग ग्राउंड दोगे तो नतीजा होगा कि अननेसेसरी देयर विल बी सम डिफरेंस इन द वोल्टेज, तो सिग्नल इंटीग्रिटी विल नॉट बी मेंटेन्ड। सो व्हेन यू आर नॉट मेंटेनिंग द सिग्नल इंटीग्रिटी, you will have the noise. The resultant will have the noise or resultant will have the error. So that if you want to do that kind of the analysis, you can go to this part, isn't? Next it comes that EMC and EMI. Basically it is related to the electromagnetic interference analysis or electromagnetic compatibility analysis. Normally that is required for, let us say, one of the example I will give, that in the MRI room we expect that there is no electromagnetic interference. Am I right? बाहर से नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस। इसके लिए हमें एमआरआई को कंपोनेंट जो हम परचेज करते हैं जो हॉस्पिटल्स, उससे ज्यादा उसकी इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम आती है और वो कॉस्टली होता है, और उसके जो रूम्स होते हैं उसको मेंटेन करना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। कारण क्या? कि वो चाहते हैं कि भाई जीरो इंटीग्रिटी, सॉरी जीरो इंटरफेरेंस। सो हाउ वी विल डू दैट? Obviously you need, as an engineer or as a scientist, you need to do the analysis that okay, इस डिजाइन में हम ऐसे ये डिजाइन लेंगे, हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जीरो हो जाए, am I right? यदि हमारा यहाँ पे मशीन है, इससे हम कुछ इतने डिस्टेंस पे हम रखें कोई दूसरे डिवाइस को, तो हमारा जो है इंटरफेरेंस जीरो है, isn't? So where if you want to look at this kind of the thing, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आज के डेट में यदि हम माइक्रोवेव में भी हम इसका बड़ा यूज हो सकता है। इसको डिस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव वे में भी हो सकता है। यदि हमें पता है माइक्रोवेव ये है इंटरफेरेंस, यदि किसी भी वर्किंग सिस्टम को मैं इंटरफेरेंस दूंगा तो क्या होगा? सिस्टम को रूइन कर देगा। मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द काली, क्या है? किलोवाट, हाई पावर। हाँ, मैं वो आईटी की बात नहीं करता। डीआरडीओ ने अभी लास्ट ईयर ही उसको ये किया था, ठीक है, जो कि हाई पावर माइक्रोवेव बॉम्ब है, दैट इज द हाई पावर माइक्रोवेव बॉम्ब। काली किलोवाट लेजर इंटीग्रेटेड
लेजर गाइडेड कुछ है उसका नाम पूरा, आप गूगल करके ढूंढ लीजिएगा। उसका क्या है कि भाई आपके कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यदि हवा में भी है, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को क्या करना है, तो इतना हाई पावर का आरएफ सिग्नल देगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को खत्म कर देगा, सिस्टम को, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो लगे हुए नॉर्मली डायोड्स वगैरह जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा भी एडवांस इन्वायरमेंट में यदि आएगा तो रूट कर जाएगा। देखते हैं एग्जांपल होगा चंद्रयान 3, इज इट? सो उस केस में अब यदि मैं इंटरफेरेंस दे करके यदि कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है मेरे ओर, कोई मिसाइल आ रहा है और उसके इलेक्ट्रो कंट्रोल सिस्टम को ही मैं खत्म कर दूं, देन कंट्रोल सिस्टम ही नहीं रहेगा तो वो टारगेट पे तो पहुंच नहीं पाएगा, इज इट? सो दैट इज आल्सो अ टैक्टिक्स। उसके कंट्रोल पायलट, ठीक है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरक्राफ्ट के ऊपर हम जो उसको इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके नेविगेशन सिस्टम में, कर सकते हैं ना हम भाई, अरे इंजीनियर है और साइंटिस्ट है तो यही काम ही है हमारा। यदि हम डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहे हैं, और दैट इज नॉट द डिस्ट्रक्टिव, रादर आई विल से दैट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ यू, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर नेशन, यू आर डूइंग द रिसर्च। सो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, आप जैसे उसको इंटरफेरेंस करके आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है कि मैं उससे इंटरफेरेंस से हमें इम्यून करना है अपने आप को। We need to immune our system with respect to the incoming interference. Then also you need to design some devices that so that I will not have any kind of the electromagnetic interference, or the interference is very low, which the system can tolerate or our device can tolerate. So if you want to go for that kind of the analysis, you can go to this particular one, EDA and this one. Thereafter you have the particle dynamics. In the particle dynamics, basically, if you want to design the high power devices like the klystron, magnetron, and that, okay, the tubes, for that you can use. We are not using right now, honestly speaking. Mostly physics people use that. Or if you are going to the Siri Plani or like lab like that, obviously they are really required to use that. Then another one is the statics applying the low frequency. So if you have something low frequency analysis, let us say that I want to go for the ECG analysis, one of the thing. ECG की frequency कितना होता है? हर्ज में होता है. Am I right? Do you agree to me? 100 हर्ज से भी के आसपास ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता. चेक करो ना कितना होता है ECG का. Respectively, that is very low. In comparison to the microwave, that is very, very low. Is it? So if you want to have some kind of the analysis on that, we can use that. So these are the different packages which we are going to use.